Now, my friend, my dearest students, once again, welcome to again in my video, and today we will discuss my next concept. मेरे पहले वाले वीडियो में you saw that we discuss about the concept of the speed. Now we will discuss about the nature and यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म नेचर. सो वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत. आज हम इस वीडियो में अगेन एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, स्पीड का सेकंड कॉन्सेप्ट. इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सी फर्स्ट वीडियो देन गो टू द सेकंड वीडियो ऑफ स्पीड. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स. सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड वी स्टार्ट द concept of the speed. And now this time we will discuss about the nature of the speed. And the first nature of the speed is, you know, that first is a uniform motion. We will discuss about uniform motion. Second thing, constant. It is very important. Constant speed. What is the meaning of constant speed? So my dear student, uniform motion, constant speed, both are the meaning is the same, and the very simple meaning is that, suppose I am start with the point A, and in the one direction is very important thing. In a one direction, suppose I cover the distance 4 unit, right? I cover the distance 4 unit, and यूनिट हम मीटर ही ले लेते हैं. इन द 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो था 4 का. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अगेन आई कवर द डिस्टेंस 4 यूनिट इन अनदर 1 सेकेंड. अगर हम टाइम की बात करें तो हमने t0 से t1 और ये टाइम हमने कंसिडर करा एज ए t2, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ एट द अनदर I again cover 4 meter distance in the time 3, but the interval is the same, again 1 second, again 1 second. Now the next is again 4 meter and time I consider as a t4, but the interval is again 1 second. So you can easily see that this is the point A, I consider this is the point B, I consider this is the point C, I consider this is the point D. Similarly, I consider this is the point E. You can easily see that in the one direction we will discuss about speed, and this time the speed itself a uniform. आपने देखा होगा distance हमने discuss करा था. Motion is a uniform, motion is a non-uniform. This time again we are using same terminology, uniform motion, but we will discuss with respect to speed. Okay my dear students, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. मान के चलते हैं, suppose A to B I consider speed is a s1. Please see to this example. Now again I consider the speed is the s2. Now I consider from C to D speed is the s3. Now I consider the speed is the s4. So we find the my speed. आज हम स्पीड फाइंड करते हैं. A से लेकर B तक मेरा स्पीड कितना रहा होगा. So s1 equals to 4 meter divided by 1 second. You can easily see that 4 upon 1, there is a no change. That means 4 meter in a 1 second. This is my speed, right my dear students. And now this time we will discuss about AB. Now this time we will discuss about only BC, my dear students, only BC. Again you can see that B to C 4 meter, time interval is the 1, but answer you can see that no change, 4 upon 1, yeah, 4, again 4 meter in a 1 second. But this time if we discuss about A to C, please see A to C. Now we will discuss about A to C. So you can easily see that 4 plus 4 total distance is the 8. आप definition याद करिए, मैंने कहा था covered the path is, now I am talking about A to C, and the covered path is of 8 unit. You can see that divided by total time taken, and now the time taken is the 2 seconds. Again you will see 4 divided by 1, no change in the answer. That means
If I take AB, same answer. If I take BC, same answer. But I take A to C, again the answer is same. You can see that this concept is represent everywhere in the same direction. If we follow this kind of the conditions, we can find the same answer. Suppose I take from A to E. Suppose I take from A to E. So my dear students, from A to E, total distance I covered 4 plus 4 plus 4 plus 4. This is the 16 unit. That means 16 meter. Total time taken 1 plus 2 plus 3 plus 4. Now again I will solve 4 by 1. You will see everywhere you will get the same answer in the same direction. Such kind of the expression of the speed is called uniform motion. So if I explain the definition of the uniform motion, we can take this example and we can frame itself. No need to require the any book. आप uniform motion को बिना किसी book के define कर सकते हैं. Total distance travel, total time taken, definition of speed. But जब हम uniform की बात करेंगे, so equal distance travel in equal interval of time, that is called uniform motion या constant स्पीड. आप देखेंगे हर जगह स्पीड आपको कांस्टेंट ही मिलेगी. 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड. सो इफ आई एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सो माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन इज द इक्वल डिस्टेंस cover in equal interval of time, in equal interval of time. This concept is called uniform या constant speed. This is the first case. It is clear? I think as such no issue, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का डायग्राम कैसे बनेगा, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. सो सेम हम इसको वैसे ही डिफाइन करेंगे. हमने यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करा था, एक डायरेक्शन में है, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही है, दोनों की रेशो सेम ही आएगी. सो दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड ग्राफ. अगर हम डिस्टेंस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन वी विल सी लाइन जो मेरा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, और इस बार आप देख सकते हैं दिस स्पीड इज अ यूनिफॉर्म मोशन. और इसके अंदर आप देखेंगे अगेन डिस्टेंस और टाइम को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. एंड दिस टाइम वी फाइंड द एंगल एवरीवेयर. हर जगह यू कैन सी दैट इसका जो स्लोप निकल के आएगा वो इक्वल स्लोप होगा. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं, कांस्टेंट रेशियो है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, एक यूनिफॉर्मली ग्राफ मिलेगा या कांस्टेंट ग्राफ आपको मिलेगा. कांस्टेंट मतलब हर जगह इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको इक्वल वैल्यू होगी. इट इज क्लियर नाउ? आई थिंक आप जब इसका डेटा देखेंगे एज सच नो चेंज. सो दिस इज द फर्स्ट केस माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से हम सीखते हैं वेरिएबल स्पीड कॉन्सेप्ट. वेरिएबल स्पीड कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस करेंगे अबाउट एवरेज स्पीड. सो चलिए फर्स्ट केस के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप आई थिंक समझ गए होंगे. नॉन यूनिफॉर्म दैट मीन्स व्हाट, जिसमें रेशियो का वैल्यू हर टाइम इंटरवल पे चेंज होगा. Right, my dear student? So it's very easy. Again, I am taking a very simple example. In very quick, we will discuss about non-uniform motion. That means unequal distance travel in equal interval of time. The concept is called non-uniform motion. I take one straight line in the one direction, and now at the point A, and I consider time t equals to 0 now, and in the 1 second, in the 1 second interval, you can see that the object travel 3 meter. Okay, now at the point B, the relation is this. I take the point C, and this time the object 1.5 in a 1 second, 1.5 unit. Again I take the another example, and this time I take the example is the 5 unit in a 1 second. So
you can see that interval of time 1 second, no change, interval of time 1 second, no change, interval of time 1 second, no change. The time I consider as a t2, now time I consider as a t3. This time we will discuss about non-uniform motion. That means motion is going on, everything is going on, but the ratio value of this motion I think will not be equal. हम यहाँ पे देखेंगे रेशियो इक्वल नहीं आएगा. सिमिलरली वी स्टार्ट विथ आई कंसिडर दिस इज द स्पीड इज द s1 my dear students. I consider the speed is the s2 my dear students, and now I consider this one is the speed s3 my dear students. Okay, so s1, s2 and the s3 these are the relation. First I am solving the relation a and b. You can see that only the AB, the 3 meter in a 1 second. So the speed is a 3 meter per second. You can see that this is the first example, right? Now I take about BC. So if I take about BC, now the distance is traveled by 1.5, yeah, 3 by 2, I can take it, and this time is second interval is the same. So the speed s2 is represented 1.5 meter per second. But आपको याद होगा इसके पहले वाले एग्जांपल्स में, if I take a to c example, so this time I am taking AC and the total distance is the 4.5, and now the distance is 4.5, total time taken is 2. If I solve this data and I solve this data, you can easily see that 2 का half 4 का half हो जाएगा 2.25. So 2.25 meter per second. You can easily see that 3 meter per second in a 1 second, 1.5 meter per second in a again when I'm talking about 1 second. You can see that 2.25 in a 1 second. The values are not equal. Again it shows that the data is not equal, mathematical data is not equal. We will discuss about the speed. Speed is a, my dear student, mathematical data. So the data is not equal, that means it shows that these speeds are not is the same at every time and any point, and that means such kind of the relation with respect to ratio, with respect to numerical value is represent non-uniform motion, right? So अगर हम कहें आपसे इसकी डेफिनेशन डिफाइन करने को, सो एंड दैट टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच काइंड ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आपने उस समय सीखा था, आज बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, right my dear students? So these are the concept is represented by non-uniform speed. Next, when you discuss about non-uniform motion, then we will discuss average speed. What is the relation of this and what is the relation of this? It's very easy concepts आप देखेंगे. So मेरा next इसी से आगे ही जुड़ा हुआ है इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो हम अब इसी के बाद जो डिस्कस करने वाले हम करने वाले हैं एवरेज स्पीड. नाउ एवरेज स्पीड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सो सी, इट्स वेरी इजी. द डायग्राम इज ओवर हियर. यू कैन सी दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड, सपोज टोटल डिस्टेंस कवर्ड 4.5 एंड नाउ आई टेक 5. ओके, सो 9.5. हम एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा करेक्ट करना है, इसलिए हम इसको 0.5 और इंक्रीज कर देते हैं. सो हमारी वैल्यू ऊपर हमें 10 मिल जाएगा. सो 3, 1.5, 4.5, 5.5. टोटल डिस्टेंस इज द 10 मीटर नाउ, एंड द 1, 2, एंड यू कैन सी दैट दिस इज द 3. सो टोटल टाइम टेकन, कंप्लीट टाइम टेकन अगर हम देखें तो t इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा है? 3. सो सपोज आई टेक फ्रॉम a to I take d, and the a to d I am discuss about speed, and the speed is the total distance travel, total time taken. Now this time total distance 10, time taken 3. हम जानते हैं डिवाइड नहीं होगा, 1.3 बार. We can consider 1.4 approx meter per second, but you can see that my dear students 1.4 meter per second, no data of AB.
1.4 meter per second, no data of BC. This is the 1.5, my dear students. 1.4 meter per second. You can easily see that 2.25 meter per second. That means it shows that जब आप ये डेटा फाइंड करते हैं, दिस डेटा इज सम ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड. सो अगर मैं आपसे कहूँ स्पीड और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो एवरेज स्पीड में हम क्या डिफाइन कर लेंगे, सम ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इंटरवल. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. सो जब आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट आप स्पीड डिस्कस करते हैं, व्हाट, एवरेज स्पीड. सो एवरेज एक कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है. जब हम पूरे केस की स्टडी करेंगे, सो एवरेज हमारा निकल के आएगा 1.4, जो ट्रू नहीं है, फॉल्स डेटा है, बट ये टोटल डिस्टेंस को डिफाइन करता है. टोटल डिस्टेंस मतलब सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस. आपके सामने मैंने डिस्टेंस को सम करके 10 बनाया. नाउ सम ऑफ द टाइम t1 t2. अब आप देखेंगे एवरेज स्पीड के अंदर एक केस और हो सकता है, हम टाइम इंटरवल चेंज भी कर सकते हैं. और अगर हम टाइम इंटरवल अगर चेंज करेंगे, तो उस समय जो हमें एवरेज स्पीड डिफाइंड होगा, तो जनरली एवरेज स्पीड को आप देखेंगे शॉर्ट में ऐसे भी डिफाइन किया जाता है. तो सम ऑफ डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस एंड सम ऑफ टाइम इंटरवल, जो भी आपने टाइम इंटरवल सिलेक्ट करा होगा. सो सम ऑफ टाइम इंटरवल, सो सम ऑफ द डिस्टेंस, सम ऑफ द टाइम इंटरवल, माय डियर स्टूडेंट्स. सो अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्रॉपरली, सो आप देख सकते हैं, I consider the distance is the d1, I consider distance is the d2, I consider distance is the d3. और सपोज इसके टाइम इंटरवल्स में हम वेरिएशंस कर दें, हम इन टाइम को चेंज कर दें. 1 सेकेंड हमने इक्वल लिया था ताकि हम डेटा को प्रॉपर समझ सकें. अगर मैं टाइम को भी चेंज करता हूँ, सो देखिए आपका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एवरेज का, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन. सिमिलरली t1 प्लस t2 plus 3 and so on. So my dear students, every time we face only this concept. यही कॉन्सेप्ट जब हम रोड पे निकलते हैं, इसी को हम फॉलो करते हैं. ये एक टेंटेटिव डेटा होता है. ये टेंटेटिव डेटा कभी भी हम जब व्हीकल चलाते हैं तो मैक्सिमम टाइम फॉलो नहीं करता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज. और एवरेज जब भी आप डिस्कस करते हैं, वो पूरी तरह से फ्रेम होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, राइट. सो दिस टाइम एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसके 2 केस पढ़ाऊंगा, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2. प्लीज सी टू इट. ये केस आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. जो मेरे इसके बाद वाला वीडियो में फ्रेम करूंगा, वो पूरी तरह से न्यूमेरिकली प्रॉब्लम बेस्ड होगा. सो फर्स्ट एंड सेकेंड में वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द फॉर्मेशन concept. Now in my third video with 4 lecture, we will discuss only the numerical problem. So average speed, and suppose I consider S1 is the first d1 distance with time is t1 now, and this time S2 speed distance d2 and time t2. You can see that both are S1 and S2 are the different, they are not same. Even distance is the not same. So if I write the only formula of average speed formula, आप देखेंगे now the average speed is sum of the distance, that means what d1 plus d2, sum of the time t1 plus t2, my dear students. Now this time if I find the value of t1 from here, so the t1 will be d1 divided by s1. Now this time I find the value of t2, so d2 is divided by s2. I can substitute this data is in this here in this formula. So the average speed is d1 no change, d2 is no change. In place of t1 we can use d1 by s1 plus d2 by s2. So this is the basic formula of when only I consider 2. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम टाइम आपको 2 and 3 डेटा गिवन होगा. इन केस आपके पास 3 डेटा गिवन होता है, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय d1 बाय s1 प्लस d2 बाय s2 एंड दिस टाइम प्लस d3 बाय
S3. सो दिस इज द फर्स्ट केस, बट इसमें हम कंडीशन नंबर फर्स्ट करेंगे. मान के चलते हैं दिस टाइम इंटरवल इज द डिफरेंट बट द डिस्टेंस इज द सेम. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो एवरेज स्पीड में केस नंबर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, और केस नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इफ द D1 and D2 both are the same. So now we will discuss first case. D1 is equals to D2. Let I consider this is the D. मैं दोनों वैल्यू को D कंसिडर करता हूँ. Let's see what change in the formula. फॉर्मूला में हमें क्या चेंज देखने को मिलता है. So average you can see that D1 plus D2 both I consider as a D. आप देख सकते हैं मैंने दोनों को D कंसिडर कर लिया है. So now D divided by S1 plus D divided by S2. You can see that I take D plus D, 2D. I take common D from the numerator. So average 2D divided by D 1 by S1 plus 1 upon S2. D से D हमने कैल्शियम किया, कैंसिल करने के बाद नीचे से हमने लिया एलसीएम. जैसे आप एलसीएम लेंगे तो एवरेज इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2. नाउ एलसीएम के बाद जो डेटा हमें मिलेगा S1 एंड S2. सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला. आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं. अगर डिस्टेंस आपको 2 इक्वल दे रखे हैं, डायरेक्ट यू कैन पुट दिस वैल्यू एंड यू कैन फाइंड द आंसर. राइट माय डियर स्टूडेंट, आई एम एडिंग वन मोर थिंग. उसके बाद मैं आपसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. सपोज हम मान के चलते हैं हमारे पास 3 डिस्टेंस इक्वल होते हैं. सपोज सो D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3. ऑल आई कंसिडर एज ए D. आप देख सकते हैं इसी फॉर्मूले को आप आगे बढ़ा सकते हैं. सेम फॉर्मूला, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा. मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे. सो एवरेज अगर हम फाइंड करते हैं, ये सब कुछ आपको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करना है. हम न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे. सो एवरेज आप देखेंगे 3 टाइम्स ऑफ D. देखिए ध्यान से, आप समझ गए होंगे मैंने क्या करा है. सम ऑफ द डिस्टेंस D1 प्लस D2 यहाँ था, एक डिस्टेंस मैंने और ऐड कर दिया. ऑल डिस्टेंस आर द सेम, दैट मीन्स 3D. नाउ दिस टाइम D डिवाइडेड बाय S1, D डिवाइडेड बाय S2 एंड D डिवाइडेड बाय S3. ये तो आप समझ गए होंगे कि इस बार डिस्टेंस सेम है, लेकिन स्पीड का डेटा इज डिफरेंट नाउ. सो सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा. यहाँ से D कॉमन निकाल लीजिए आप. सो एवरेज 3D divided by D 1 by S1 1 by S2 1 by S3. Now cancel D and take the LCM. You all are the physics and most of the are comfortable with the mathematics, so you can take easily LCM of this data. So now average is 3. ये डेटा एज इट इज मिलेगा. देखिए यहाँ पर 2 मिला था, यहाँ पर आपको 3 है. दैट मीन्स 2 टाइम्स आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा था, इक्वल था इसलिए 2 आया. शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको मैं. यहाँ पे आप देखिए 3 आएगा. जब ओवरऑल ऑफ इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, S1 S2 S3. जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे S1 S2, इन दोनों का लेंगे S2 S3 एंड नाउ S1 एंड S3. आई थिंक आप समझ गए होंगे. इफ आई टेक अनदर डिस्टेंस, अगर मैं एक डिस्टेंस और कंसिडर कर लेता तो इसी फॉर्मूले में हम चेंज कर सकते थे और डिस्टेंस हो जाता 4 S1 S2 S3 S4 और उसके बाद S1 का S2 से, S1 का S3 से, S3 का S4 से, S2 का S3 से, S2 का S4 से और नाउ S3 का S4 से हम एलसीएम कंसिडर कर सकते हैं. बट डोंट वरी, इतना बड़ा डेटा आपको गिवन नहीं होता है. बट इन द शॉर्ट, इन द लास्ट, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला फ्रेम करूं कि इसको जनरली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो आप देख सकते हैं इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को. सो आप समझ गए होंगे, अगर हम इसका जनरल बनाएंगे तो 3 की जगह n आ जाएगा, S1 S2 S3 Sn आ जाएगा. सिमिलरली आप देखेंगे S1 S2 S2 S3 एंड सो ऑन. लास्ट वैल्यू आ जाएगी n-1 और n. सो आप देखेंगे दिस इज अ कॉमन फॉर्मूला. एज ए फिजिक्स स्टूडेंट, एज ए कॉम्पिटिटिव लेवल की आप प्रिपरेशन करते हैं, आपको ये फॉर्मूला बहुत क्लियर होना चाहिए. यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इन अ वेरी स्मॉल टाइम क्विकली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. राइट माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड द एवरेज. और आपने देखा दोनों का एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, जो हमने इसमें डिस्कस करा. अब
मेरा जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे उसके हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. सो नाउ द नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट्स. राइट.